I am going to tell you in this problem how to make the foreign exchange fluctuation account without passing any journal entries. And most of the things will be very logical. Basic rule अपना वही है. In case of a loss, foreign exchange fluctuation account will be debited. In case of profit, foreign exchange fluctuation account will be credited. At the end of the year, balance in the foreign exchange fluctuation account will be transferred to P&L account. क्यों? क्योंकि सर वो नॉमिनल अकाउंट है. Rent account, salary account, wages account, purchase account, sales account, same way foreign exchange fluctuation account, all these are nominal account. Real and personal accounts go in the balance sheet. Bank account won't go in the P&L account. You have done final account right from your 12th standard. बचपन से कर रहा है. So assets and liabilities will basically have only real and personal account. Machinery account is a real account. Basic 11th standard basics. Keep on saying every now and then. Even when I'm discussing something with a CA final student or an MCOM student, I still use the same logic that was taught to you in 11th standard. More than the journal entry, वो entry में debit क्यों करता है, credit क्यों कर रहा है, that should be understood by the student. Very clear. I'm not someone who believes in rectified teaching. Come to the problem now. Generalize the transactions. I assume my voice is clear to the last bench. In case it is not there, you can always let me know. Generalize the transactions in the books of Exim Limited for the year ended 31st March 2013. This part will not be done by me. This will be done by you. And this is not a school where I'm going to check each and every book. I'm not going to do anything like that. You have a doubt, come to me. You feel you have solved a question I have not checked, let me know. The 8th and 9th, I think 7th, 9th and 10th, I have not yet checked. I have checked one and I have not checked the other one. Whatever may be the case, you are supposed to approach me. My way of pattern is very clear. There is no spoon feeding from my side at all. On 1st July 2012, goods worth US dollars 1,05,000 were exported to पास्को लिमिटेड. हमने पास्को लिमिटेड को गुड्स एक्सपोर्ट किया और पैसा कब मिला सर? हमें पैसा मिला 5th नवंबर को और 11th मई को. आराम से थोड़ा रेट्स देखो, कहीं नीचे रेट्स दिया हुआ है, नीचे कहीं तो भी रेट्स दिया है. एक मिनट सर. 1st जुलाई को आपने $1,05,000 का इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया. 1st जुलाई का रेट क्या है देखो बच्चा लोग. 1st जुलाई का रेट क्या है? 41 है. क्या हो गया? 41 इज द रेट. ओके. जब एक्सपोर्ट किया तब रेट था 41. फिर हमको पहला पेमेंट कब मिला बच्चा लोग? 5th नवंबर को पेमेंट मिला. 5th नवंबर 2012. व्हाट इज द रेट ऑन 5th नवंबर? चेकआउट 5th नवंबर का रेट. भाई और बहनों, चेकआउट 5th नवंबर का रेट कितना है? तो जब एक्सपोर्ट किया तब कितना रेट था? पैसा मिला तब क्या रेट है? As you are okay with Hindi. Okay, any student from South or maybe from outside India, let me know if you are not okay with the Hindi. So 41 का रेट से हमने एक्सपोर्ट किया. पैसा क्या रेट से मिला? ₹1 कम मिला, ज्यादा मिला? फायदा क्या नुकसान है? नुकसान है तो एफईए के अकाउंट में डेबिट होगा, क्रेडिट होगा?
तो कौन पार्टी का नाम क्या है देखो तो, पास्को लिमिटेड इज द नेम ऑफ द पार्टी. I'll pass the entry here in the ledger account directly. I am making the ledger account. भाई और बहनों हम बना रहे हैं ledger account. Ledger account. This is the foreign exchange fluctuation account that I am going to make. Hold on for 1 second. This is my date, particulars, journal folio, and rupees. And same thing apply on the credit side as well. Date, particulars. What's the date? सर पहला पेमेंट कब मिला चेक करो. सर 5th नवंबर को पेमेंट मिला पहला. 5th नवंबर 2012, $70,000. So 5th नवंबर 2012 टू पार्टी का नाम था पास्को लिमिटेड. So to Pasco Limited, what will be the amount? So $70,000. $70,000 multiplied by $70,000 multiplied by what was the export rate? 41. पेमेंट क्या रेट से मिला? ट्रांजैक्शन रेट 40. कितने का नुकसान हुआ? 1 रुपी. So 1 रुपी पर डॉलर मल्टीप्लाइड बाय $70,000. क्लियर है क्या? आगे बढ़े. तो सेकेंड पेमेंट कब मिला बेटा? सेकेंड पेमेंट कब मिला? 11 मई 2013. भाई और बहनों हम लोग अकाउंट कब तक का बना रहे हैं? वी आर मेकिंग द अकाउंट ओनली टिल द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013. क्या हम 11 मई का पेमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? Are we going to record the payment on 11th May here? No sir. On 31st March हम लोग क्या बोलेंगे? 31st March को $1,05,000 का एक्सपोर्ट किया. सर $1,05,000 में से $70,000 मिल गया, बाकी $35,000 आर आउटस्टैंडिंग. तो उसका क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन. क्या करना होगा सर? 31st मार्च का रेट लगेगा उसके लिए अपने को. क्लोजिंग डेट का रेट. वी नीड द रेट ऑन द क्लोजिंग डेट. आर यू गेटिंग मी? चेक द रेट. 31st मार्च का रेट क्या है? चेक द रेट ऑन 31st मार्च. सर 42 रुपीज हो गया रेट. कितना हुआ 31st मार्च का रेट? सर एक्सपोर्ट किया तब क्या रेट था? व्हाट इज द रेट ऑन क्लोजिंग डेट? यू आर गोइंग टू रिसीव 1 rupee more or 1 rupee less? As per the valuation we are going to receive 1 rupee more. प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट हो तो कहां पर आएगा? एफईएफ अकाउंट में, डेबिट में या क्रेडिट में? तो क्रेडिट साइड में एट द एंड ऑफ द ईयर आएगा. इसके लिए मैं इस एंट्री को सबसे नीचे कर रहा हूं यहाँ पे. 31st मार्च 2013 बाय पार्टी का नाम क्या था? पैस्को लिमिटेड. बाय पैस्को लिमिटेड. हाउ मेनी डॉलर्स आर पेंडिंग? $35,000 multiplied by how much? By how much? 42 minus 41. 1 रुपए का फायदा हुआ तो 35,000 का बेनिफिट. Any queries still here? We are done with the first case in the question. इसमें मल्टीपल केसेस है बहुत सारा. तो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड बी वाला केस. गुड्स वर्थ $5,000 were exported on 15th July to Joe Limited, USA. Amount was received after 30 days. 15th July से 30 days आगे approximately it will be 14th or 15th of August approximately. देखते हैं नीचे रेट कौन सा दिया है. और हमने एक्सपोर्ट किया था 15 जुलाई. सर 15th जुलाई का रेट है
41.25 and we are receiving the money on 14th August. What is the rate? 41.5. When we exported, the rate was 41.25. When we received the money, the rate was 41.5. We are receiving 25 paisa less or more. फायदा है क्या नुकसान है? फायदा है तो कहां पर आएगा? On which date? 14th August. जिस दिन पैसे मिला उस दिन आएगा. 15 जुलाई ट्रांजैक्शन हुआ था. 15 जुलाई ट्रांजैक्शन हुआ था. मिलेगा यहाँ पे 14th August 2012 by Joe Limited. How many dollars? How many dollars? $5,000. $5,000 multiplied by 41.25 and 41.5. 41.50 minus. Any questions? Any queries still here? Clear है बच्चा? All of you. What is the amount here? 1250. Check it out. Is it 1250? Next, we are done with the second transaction. Come to the third transaction. On 15 September 2012, raw material worth $20,000 were imported. Payable 50% immediately. भाई और बहनों, अगर पेमेंट immediately होता है, the day when you bought the goods, on the same day you paid 50% means half of the amount. Out of $20,000 imports, you have paid 50% means you have paid $10,000 immediately. Use your common sense. I am buying on a particular, let us say I am buying today. And today is when I bought the material, when I imported the material, the rate was, let us say, 48 rupees. मैंने क्या रेट से बाय किया? 48 रुपीस के मैंने गुड्स इंपोर्ट किया और उसमें से आधा पेमेंट इमीडिएटली कर दिया. तो क्या रेट से पेमेंट किया होगा? 48 से किया होगा. Is there any exchange rate difference? For the 50% amount paid immediately, is there any exchange rate difference? No. पेमेंट तुरंत हो गया. बाकी 50% का पे किया, दिया देखो. Balance was paid on 15th April. नहीं, अपने को वहां तक नहीं जाना है सर. अपने को 31st मार्च तक की बात करना है. हम 31st मार्च को क्या कहेंगे? Out of total imports, how much is the balance payable? $10,000. 20,000 में से आपने 50% immediately पे कर दिया. बाकी $10,000 जो 50% आता है वो आप कब पे करोगे? 15th April. But before that my closing date comes. So on my closing date, that is 31st March 2013, I will compare the exchange rate. मैं कहूंगा जब मैंने import किया, कौन से दिन import किया? 15 September. चलो चेक करते. तो 15 September के दिन जब मैंने उसको import किया, friends, when I imported the material on 15 September, the rate was how much? And how much is the rate on 31st of March? So when I imported the material, it was 41 rupees per dollar. When I'm doing the valuation on 31st of March, the rate is 42 rupees per dollar. एक रुपया ज्यादा पे करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा? ज्यादा पे करना पड़ेगा. फायदा है क्या नुकसान है? मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं कैसे सोचना है और कैसे उसको सॉल्व करना है. This is the way it should be solved. So now I'm going to use it. Debit side. What was the date? 31st March. 31st March तो हम लोग थोड़ा नीचे लेते हैं लास्ट में. 31st March 2013. 2. सर किससे इंपोर्ट किया? चेक करो नाम. We have imported the goods from Robert Limited. So to Robert Limited, how many dollars? $10,000 multiplied by
My closing rate is 42. I import at the rate of 41. So I have to pay 1 rupee more. I have to pay 1 rupee more. So loss कितना आएगा? 10,000 rupees. Let's come to the next thing now. You are done with the A, B, and C point. Come to the D point. Bacha log, come to the D point. Raw material were imported on 31st October worth $10,000. 31st October को import किया from Blue Cross Limited. Payment was made after 45 days. मतलब सर 31st October के बाद 30 days होता है 30th November और 15 दिन और ऐड करो 15th December. Are you getting my point? समझ में आ रहा है? 15 दिसंबर को पेमेंट करेंगे. रेट चेक करना पड़ेगा. जो हमने इंपोर्ट किया 31 अक्टूबर को, सर 31 अक्टूबर को रेट था 41.75 और जब हमको पेमेंट किया क्या लिया, इंपोर्ट था एक्सपोर्ट था? इंपोर्ट था एक्सपोर्ट था? इंपोर्ट था. तो जब हमने पेमेंट किया तब क्या रेट है सर? 42. When we imported, the rate was 41.75. When we made the payment, the rate is 42. So we are paying 25 पैसा more. फायदा है क्या नुकसान है? नुकसान है तो कहां पे जाएगा? डेबिट साइड. Are you getting me? The name of the party is Blue Cross Limited, UK. Date will be date of transaction 15th December. 2. Blue Cross Limited account. How many dollars? How many dollars? $10,000. $10,000 multiplied by how much? Sir, 42 minus 41 point. Right? 0.25 into 10,000 will be 2,500. Just check out. Right? Come to the next case now. Point number E. Point number E. बच्चा लोग, on 15 December, goods worth $75,000 were exported. सर 15 दिसंबर का रेट देखिए आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन में. सर 15 दिसंबर का जो रेट है कहाँ गया? डाउन साइड. हाँ जी. The rate on 15 December is 42. पैसा कब मिला? सर पैसा कब मिला? $30,000 का issued on 15th Feb. ये रहा 15th Feb का. तो जब एक्सपोर्ट किया तब क्या रेट था? 42. जब पैसा मिला तब क्या रेट है? 42.5. वी आर रिसीविंग 50 पैसा लेस और मोर. मोर है तो फायदा है क्या नुकसान है? फायदा है तो कौन से अकाउंट में जाएगा? फायदा है तो कौन से अकाउंट में जाएगा? Here comes the date. 15th Feb 2013. Buy. What is the name of the party? You are buying the goods from which party? Thomas Limited. It was Thomas Limited. By Thomas Limited. So we are receiving how many dollars on 15th Feb? $30,000. 30,000 multiplied by 42.5 minus 42. Amount comes to how much? Amounts come to 30,000 into 0.5. 15,000. Next, we are receiving the second payment. Bhai aur behno, we are receiving the second payment on 15th March, $45,000.
So when the goods were exported on 15th December, the exchange rate was 42. When the money is received on 15th March, the rate is 42.75. तो हमें 75 पैसा कम मिला, ज्यादा मिला, कम मिला कि ज्यादा मिला? Okay, check here. The rate on 15th December when the goods were exported was 42 transaction date, and when the money was received on 15th March called as the settlement date. जब एक्सपोर्ट किया तब रेट था 42, जब पैसा मिला तब रेट क्या है 42.75. We are receiving 75 paisa more. How many dollars we received? How many dollars we received? Sir, $45,000. तो 15th March फायदा है by Thomas Limited account. $45,000 multiplied by what? Sir, 42.75 minus 42. 0.75 into 45,000 करो. Wrong है. Wrong है. 30,000 नहीं आएगा. 37,500 आ रहा है. 33,750. Check out. So one last transaction now. One last transaction, F wala point. Tata and machinery was imported from California Equipment Limited on 1st Jan. So 1st Jan का रेट देखो बच्चा. 1st Jan का रेट है 42.25. 1st Jan का रेट है 42.25. सर हमने उसको पेमेंट किया 30th अप्रैल. नाना सर 30 अप्रैल तक नहीं जाएंगे हम. हमारा साल खत्म होगा 31 मार्च को. हम कहेंगे जब हमने इंपोर्ट किया था, जो हमने मशीनरी इंपोर्ट किया था 1 जैन को, तब क्या रेट था 42.25. 31 मार्च को वो रेट कितना हो गया? 25 पैसा कम पे करना पड़ेगा वैल्यूएशन की वजह से. ज्यादा कम पे करेंगे तो फायदा है क्या नुकसान है? फायदा है. तो कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड. एंड डेट विल बी 31 March. By California Limited. How many dollars? How many dollars? Sir, $14,000. $14,000 multiplied by 25 paisa. कितना आ रहा आंसर? 3,500. Check it out. Is it 3,500? We are done with all the transactions now. We are done with all the transactions. We started from A, B, C, D, E, F. All transactions done. Now what we are supposed to do? I told you at the start of the lecture itself. Sir, foreign exchange fluctuation account is a nominal account. So any balance in this account shall be transferred to profit and loss account. चलो balance निकालते हैं इसका. On the debit side we have 70, 80, 82, 500. On the credit side we have 35, 38, 41, 71, 72, 73, 78, 88,000. Check करो, I may be wrong also. 35, 38, 38, 500 आ रहा है क्या? 88, 500. राइट है? राइट है? डिफरेंस निकालिए बच्चा. सर क्रेडिट साइड इनकम है, 88,500 का फायदा हुआ. नुकसान कितने का हुआ? 82,500. डिफरेंस निकालो बच्चा. 6,000 का डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर. 6,000 का डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर. ये जाएगा आपका 31 मार्च 2013 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर एंट्री.
इसे कहते हैं बच्चा लोग हम लोग ट्रांसफर एंट्री. Is that clear? This being the balancing figure, I'm just highlighting this with the highlighter. ऊपर हेडिंग आएगा नाम पहले अकाउंट का, ऊपर ना हेडिंग हेडिंग तो इसका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. क्लियर है? एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? Shoot now, first solve it. You won't be able to look at the question. You have the question on your mobile. Look at the solution. That's it.